Hello and welcome to S Studio, and this is your mentor Sanyukta Singh. I think guys you already know me, and in this session I have come up with a very important topic for you if you are in your college already in third year or second year. So already I think you are pursuing your industrial internship and you will find difficulty in making your documentation in the industrial internship documentation. So in this session I am here with the industrial internship documentation of mine, showing you everything in the document, that how are you going to write each and everything related to your industries. So do watch this video as a whole and you will learn a lot. So guys, as you all know, this is your summer internship and you are going to make documentation on it. So you can see this was my document of summer internship which I went in 2013. Might be not 2013 but 2014, because मेरा year था 2011 to 15 and इसके just 6 months के बाद we go to a graduation project. आप भी जाते होगे बिकॉज फैशन में, टेक्सटाइल्स में, कम्युनिकेशन में, नेटवेयर में आप जाते हो ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट पे. सो in under this session I'm only going to tell you how are you going to make your internship project, ठीक है, documentation, and not graduation documentation. That I will make another video for graduation documentation, that is also very much important. So under this session मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, सारे details बताने वाली हूँ, that how are you going to write the acknowledgement part, the overview part, and the purpose of your internship. At the end, how are you going to write reference, bibliography, and each and every I'll talk about each and every department here. जितने भी departments आपके उस industry में होते हैं, the quality checking department, the production department, the packaging department, the sampling department, कितने export house, like this was the export house, so what kind of buyers are there, what are the criterias on which this export houses works. So every minute detail you will find in this document. आप देख सकते हो कि मैंने इसको soft bind करवाया हुआ है. This is also called magazine bind. तो आप अपने डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट बाइंड या मैगजीन बाइंड करवा सकते हो. आई पर्सनली डू नॉट प्रेफर दैट स्पाइरल बाइंडिंग बिकॉज वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है. So you can make your document like this if you are in your third year and you have already gone for your internship. So let's get started to this session. Like ये तो physical copy है, तो मैंने आपको पूरा का पूरा PDF दिखाया है अपना इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट का. तो आप इसको बहुत ध्यान से देखना, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इफ़ यू आर गोइंग टू मेक योर डॉक्यूमेंट. ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि यू विल ऑलवेज गेट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम योर इंडस्ट्री. ठीक है, जिस इंडस्ट्री में भी हो, वेल्सपन में हो, जयपुर के किसी इंडस्ट्री में हो, सूरत के किसी इंडस्ट्री में हो. सो डू नॉट फॉरगेट टू अटैच योर सॉफ्ट कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट इन योर डॉक्यूमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर योर जूरी, बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट यू आर गोइंग टू टेक इन योर जूरी ऑल्सो, और इसके बेसिस पे ही आपके मार्किंग्स होंगे. सो ये छोटी छोटी माइन्यूट डिटेलिंग्स है जो कि आपको बाइंडिंग के पहले, सॉफ्ट बाइंडिंग हो या हार्ड बाइंडिंग हो, उसके पहले आपको ध्यान में रखना होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस PDF. Here is the PDF of summer internship. So this is my front page of the document, on which I have written in the bold letters summer internship. This internship is very much important if you are in textiles or fashion or communication department. ये third year में होता है, so approximately 6 semester होता है. So in that year, for 2 months, this internship is very much important. So this is the front page. As you can see here, I have written efforts by Sanyukta Singh, my department's name, my college name, and my enrollment number. Enrollment number is something which you get in your ID card. I have written my center coordinator, Mr. Debo Jyoti Ganguly's name, because I was under his mentorship for this summer internship. Now my college mentor was Mr. अर्नब सेन. तो आपके भी होंगे कॉलेज मेंटर होंगे और आपके सेंटर कोऑर्डिनेटर भी होंगे, तो आपको उनका नाम मेंशन करना होगा आपके फ्रंट पेज पे.
So again, my department and NIFT and the industry I visited, which is Ahuja Overseas in Jaipur. And in that industry also, there was my mentor who was Jasdeep Ahuja and Amrita Singh. She was also my senior. So I have mentioned all the details in my front, which is the cover page. Now मैंने आपको अपना document दिखाया है, that is soft binded and not hard binded, so it's up to you. In this 2 months of internship, we are not told to like hard bind it, so I did the soft binding, which is also called the magazine bind. And lastly, in that very page, I have mentioned Department of Fashion and Textiles, which is of again NIFT. So this is my layout of the document. As you can see, this document is made in InDesign. So further, I would be taking sessions of portfolio making in InDesign. So wait for it. Again, you can see the second page. Now the document's second page is usually blank because हम कोई भी magazine या कोई भी book, when we open it, you can see कि second page पे नहीं होता है कुछ. So it is for balancing kind of thing. So इसके लिए I have kept the second page as बिल्कुल blank, and you can see the stripes and this design. This is my basic layout. So you can always make a basic layout of your document, which is very professional and aesthetically appealing too. And see, at the top of this document, I have written documentation on Ahuja Overseas Jaipur. So whatever company you are working under, you can mention it there. You can also, like if you're working in Welspun, you can mention Welspun of Mumbai or Hyderabad, wherever you're working. Now the third page I have dedicated to the logo of Ahuja Overseas. So you can do this way. You can dedicate the logo of the company you're working, or the brand name or the image of the company you're working. Again, you can see the page is also mentioned here. So these all things I have done in InDesign. So if it is possible to you, and if you know InDesign well, you can also mention the page. And if you know Photoshop well, you can also make your document in Photoshop. Now here in the 7th page, I have mentioned acknowledgement. Now it is very much important to acknowledge the people who have helped you in your this documentation and internship both. So I have written my teams. I have expressed my gratitude towards my designers and the merchandisers who were from the production department, and the design department too. Also the director of Ahuja Overseas, and the manager of Home Furnishing Department. Also, priorly I have given my acknowledgement and my gratitude to the center coordinator of the Textile Design Department of NIFT, with Mr. Debojyoti Ganguly. So this is very much important to mention your department center coordinator's name. Again, this was my page of acknowledgement, as you can see. Moving forward, now this is the page of content. This is very much important to mention all the details, all the titles, whatever you have written in your document. So I have written the purpose, the research, the city I went. अगर आप मुंबई गए हो तो you can write about Mumbai. I have written about my company, which is Ahuja Overseas. If you are working in Welspun or Rituberi or Sabyasachi, you can always write the designer's brief, okay, designer's name and its details. Now aim and objective, processing of an export house, various departments, merchandiser ka role, production department, sampling department. So each and every department of that company, how the company is working, you are going to mention all those things in your content, because this internship is where you are learning the manual things, how a design industry works, how a export and import industry works. Also the SWOT analysis, learning, conclusion, suggestions and reference. So हम आगे जाकर के ये सारी चीज़ें देखेंगे. Again, now you can see this documentation on Ahuja Overseas Jaipur, which I have written, is constant. Now purpose. What was the purpose of my internship? I have mentioned here. You can also write your purpose like this. I have mentioned it in points, so do mention it in points, because paragraphs
कोई जल्दी पढ़ना नहीं चाहता, सो आप मेंशन कर सकते हो पॉइंट्स में, लाइक टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ दिस कंपनी, कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स प्रोसेसिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर, टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मर्चेंडाइजर्स इन आहूजा ओवरसीज, to study the export procedure. So you can read this. Now moving forward, the research methodology, which is very much important. What kind of designing they are doing, how they are working, what is the qualitative research. So everything you are going to research in detail, and that you are going to mention under this slide or under this page. See, now I have mentioned about city Jaipur in my 15th page. Now Jaipur is a pink city, as you all know. It belongs to Rajasthan. So the culture of Rajasthan has been reflected on the products and the designing of Ahuja overseas in their home furnishing departments. Apparels में थोड़ा सा different है, but in home furnishing departments, the bright colors, the sequin, the adda ari work, that has been showcased. So this I will talk further. अभी तो मैंने city जयपुर को describe करा है and वहाँ के culture को यहाँ पे describe करा है. So similarly, if you are in Surat or if you are in Delhi, you are going to speak about the city in your document, 1 or 2 page probably. Then the export house. Now I have explained about Ahuja overseas, its infrastructure, how many machines are there, how many RE embroidery machines are, chicken embroidery machines are there, what are the major clients of that very export house, what is ISO 9001:2000, whatever the company is, I have explained in this slide. So this is what you are going to do. Again, I have given the aim and objective of that very company. Now, aim and objective includes the selling, the purchasing, the export, the import, how is the company growing, what kind of business it is doing, how the company's goodwill is being improved, what is the nature of the business, what is the political business. So everything I have explained here of the company, the supplier, customer, employee, shareholder, media, competitors, and the way this is designed, all you can see, like मैंने एक colorful boxes, hexagon boxes में दिखाया है, तो आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो. इस पे ही मार्किंग होती है, बिकॉज जो 2 months का इंटर्नशिप हम करके आते हैं उसमें आपको इस पे मार्किंग नहीं होती कि आप वहाँ से स्वॉचेस लेकर आ रहे हो या प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हो. डैट इज included in the X factor, आप ला सकते हो, but what is important is your documentation, because in your 5th semester I believe or 6th semester I believe आपको portfolio पढ़ाया जाता है, and that portfolio is taught on the software InDesign. So here your designing portfolio documentation skills are also judged through this. Now the next slide, next page, I have shown the effective business correspondence, the important considerations. So you can skip it also or you can show it also. The more detail you can show, you are like that will be eye catching to the examiner or the jury members. वो उनको अच्छा लगेगा कि आपने इतने डिटेलिंग में काम किया है. So जितना डिटेल में आप दिखा सकते हो, that is very very much good. Again, in the next slide, I have shown the processing of an export house. How does the export house works? What is the market research? What is the client strategy? How a buyer is giving his designs and how designers are working on it. How buyer is being selected. So everything is here I have discussed of that very company. So when you visit your company, you have to discuss all these things from your mentors. You have to like do a full conversation regarding your that very company. इसके लिए अगर आपको के हेड से भी बात करनी पड़ जाए, then you should never hesitate to do that. Again, moving forward, I have shown the processing of an export order. Like अगर कोई बायर कोई ऑर्डर देता है, देन हाउ दैट ऑर्डर इज़ बीइंग प्रोसेस्ड, क्या उसमें कोई ड्रॉबैक्स है, क्या उसमें कोई चेंजेस है, देन हाउ इज़ इट गोइंग टू प्रोसीड. हियर आई हैव शोन इन दिस पेज एंटरिंग इनटू एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, everything I have shown in my document. Now what are the various departments, this I have shown in my this
पेज नंबर 27, इन विच होम फर्निशिंग एंड अपैरल्स में मैंने डिज़ाइनिंग, मर्चेंडाइजिंग, जो कि जितने डिपार्टमेंट्स है सेपरेटली मैंने उनके बारे में बात की है. द ग्रे डिपार्टमेंट क्या होता है? द रॉ मटेरियल्स डिपार्टमेंट, जो चीज़ें रॉ हैं, अभी बनी नहीं है एंड वो आगे जा करके बनेंगी, दैट इज़ द फैब्रिक्स ग्रे डिपार्टमेंट. आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट. Washing and dyeing department, sampling, production, quality checking, packaging, shipment. So here in this page, the right hand page, I have shown the hierarchy. You can watch, because जितने भी export houses हैं उनकी kind of similar hierarchy है, so this will help you a lot. Now I have talked about designing, how the color palette is decided both in apparels and home furnishing, and how is it matched with the forecast, and how the color is being judged, कि कितना उसका, like is it turk or is it teal, because there is a difference between all these colors. So the number is assigned, so it is a very like depth process. ये अगर आप डिज़ाइनर हो एंड अगर आप थर्ड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, तो आपको इसकी नॉलेज आपके फैकल्टीज़ दे रहे होंगे. अगेन हियर आई हैव शोन द रोल ऑफ अ मर्चेंडाइजर. सॉरी गाइज अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपको दिखे, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज यहाँ पे मर्चेंडाइजर की स्पेलिंग थोड़ी गलत है. बट अगेन हियर आई हैव शोन द रोल ऑफ अ मर्चेंडाइजर. जो 4-5 पॉइंट्स होते हैं मैंने वो दिखाने की कोशिश करी है. सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस होल डॉक्यूमेंट, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इफ़ यू आर मेकिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर योर इंटर्नशिप. So do look it and do try to take all the good and important points from here. Now here I have talked about production department. Again, the production department is the gray department, washing and dyeing. ये production में आती है, तो मैंने इस यहाँ पे भी इन डिपार्टमेंट्स के बारे में बात की है. स्टिचिंग एंड कटिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग, पैकेजिंग, प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड एवरीथिंग. You can see. Now the sampling department, this is the picture from Ahuja Overseas only, the pattern making master ji हम कहते हैं उन्हें in our field. So here I have shown how does the sampling department works with a picture. And again here I have shown the how is the open bath system, the drying machine and washing machines department is shown, like वही fabric जब dye होती है तो कैसे वर्क करती है, एंड एवरीथिंग, व्हाट काइंड ऑफ केमिकल्स आर यूज्ड, व्हाट काइंड ऑफ डिफाइनर्स आर यूज्ड, every minute detailing I have researched about my company when I visited for my internship. So I have mentioned it here, as you can see. Now the fabric store, from there we take the clothes, and कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम directly use कर लेते हैं, they are not the grey fabrics, and we work on that if we are designing for a home furnishing or apparel. So I have shown this department also. Again, moving forward, I have shown the cutting and spreading department. So these are the departments. Here after the pattern is made, they come to cutting department. अगर कोई pattern है जो कि apparels के लिए जा रहा है, तो इस department में सिर्फ उसकी cutting होती है before stitching. Either it is bag or cushion or anything. So here I have shown the cutting and spreading department. You can see. Moving forward, I have shown the responsibilities of a cut order planning. So everything is very, very much important. What kind of tools and equipments they are using, what is the how is the working area, everything I have shown. So if you are visiting your company for internship, do not forget to take photographs, because they are going to be very, very much helpful in your documentation further. Now this was the stitching department. And how does it work, what kind of machines are there for ticketing. Now what is ticketing, वहाँ उस प्रॉपर जो भी आपका अपैरल है उस पर स्टाइल नंबर, साइज, हाउ मच प्लाई एंड बंडल नंबर, ये सारी चीज़ें उस मशीन से लगती हैं. सो दिस डिपार्टमेंट, सो दिस थिंग इज अंडर स्टिचिंग डिपार्टमेंट. सो दिस इज what you are going to mention. If you are like working on minute detailings also, अगर आप minute detailings को भी cut कर रहे हो, हर एक department में visit करके proper research कर रहे हो, तो आपको ये सारी tools दिखाई देंगी. Now the bundling department, वहाँ पे ऑर्डर नंबर होता है, क्वांटिटी, स्टाइल नंबर, साइज, सेक्शन, कॉलर, हर एक चीज़ें मेंशन होती है. दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर एन एक्सपोर्ट हाउस. सो इफ़ यू आर इन एनी एक्सपोर्ट हाउस, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत फेमिलियर लगेंगी. एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, एंड दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर डॉक्यूमेंटेशन. नाउ द क्वालिटी assurance department, I have
mentioned with a bubble here, which is inspection, correction of defects, डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट. एक बार डिफेक्ट्स को हम ढूंढते हैं फिर उसमें करेक्ट करते हैं. तो ये सारा जो प्रोसीजर है, 5 स्टेजेस ऑफ प्रोसीजर जो है इसमें, वो सबको मैंने बहुत ही माइन्यूटली एंड बहुत ही डेंसली लिखा है. सो डू स्टडी दिस डॉक्यूमेंट, डू स्क्रॉल डाउन विथ योर नीड ओनली, एंड आपको बहुत हेल्प होगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एनी डॉक्यूमेंट. नाउ द इंस्पेक्शन टर्म, द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट पेज एक्चुअली. सोइंग डिफेक्ट्स, कितने तरीके के सोइंग डिफेक्ट्स होते हैं मैंने उसके बारे में भी मेंशन करा है. व्हाट काइंड ऑफ ब्रोकन स्टिचेस आर देयर, सीम ग्रेन, सीम पकर, प्लीटेड सीम्स, एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट थिंग आई हैव रिसर्च्ड एंड मेंशनड हियर. व्हाट आर द कटिंग डिफेक्ट्स, व्हाट इज द फाइनल इंस्पेक्शन के कितने स्टेजेस हैं एंड उसमें क्या होता है, एंड एवरीथिंग आई हैव मेंशनड, यू कैन सी हियर. सो आई गॉट अ वेरी गुड मार्क्स ऑल्सो हियर बिकॉज इतनी डिटेलिंग में किसी ने भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाई थी. So I try, not try, but I decided to show this document to you all because बहुत हेल्प हो जाएगी आपको, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा टू योर मेंटोर्स और टू योर सीनियर्स फॉर एनी डॉक्यूमेंट. यू कैन जस्ट गो थ्रू माई डॉक्यूमेंट एंड यू कैन start working on your document too. Now finishing and packaging department is also there, where is tacking, packing, everything I have mentioned. Now there are some pictures of quality inspection department. Chemical defect fabric is treated, how the treatment is done. तो ये मैंने हर पिक्चर आप देख सकते हो क्लिक करी है पूरे डिपार्टमेंट्स में विजिट करके, एक प्रॉपर रिसर्च करके. तो अगर आप ये मेरा डॉक्यूमेंट देख रहे हो एंड इफ़ यू आर ऑन योर इंटर्नशिप, डू दीज थिंग्स प्रायर, डू क्लिक योर पिक्चर्स प्रायर. ठीक है. सो प्रेजेंटिंग, चेकिंग एंड कार्टून पैकिंग, ये पैकेजिंग डिपार्टमेंट को भी मैंने बहुत अच्छे से दिखाया है, आप देख सकते हो. एंड आई हैव रिटन ऑल्सो वेरी नाइसली. नाउ द होम फर्निशिंग डिपार्टमेंट गाइज, दिस वॉज द डिपार्टमेंट आई वॉज इन. So what were the major buyers of this department? I have mentioned all the major buyers. The bags, what kind of bags they worked on, what kind of colors they used, what kind of techniques they used, I have tried to show that also. Now how merchandisers work under this department, I have shown this. How the production manager works, how the tech pack, what is tech packs, what are the tech pack technicalities, everything I have shown. अगेन आई हैव टॉक्ड अबाउट बायर्स. जितने भी बायर थे मैंने अपने जो हमारे हेड थे, मेंटोर थे, उनसे बातें करके मैंने चीज़ों को लिखा है प्रॉपरली. वो बोलते थे एंड मैं लिखती थी. सो यू आर गोइंग टू प्लीज़ गो एंड सिट विथ योर मेंटोर्स एंड टॉक टू देम. एंड सारी इन्फॉर्मेशन को आप अपने, इफ़ यू आर अ डायरी पर्सन, अपने इन्फॉर्मेशन को अपने डायरी में लिखो. आजकल तो बच्चे रिकॉर्ड करते हैं बट समटाइम्स मेंटोर्स डू नॉट अलाउ टू रिकॉर्ड योर like these conversations. तो आप लिख लो because writing is I think the best. Now I have shown my designs there, जो कि मैंने वहाँ पे काम किया in this home furnishing company. My designs were basically on surface techniques on textiles, and the techniques I worked on was applique, gota, ari, adda, zari, dabka work, चिकन एम्ब्रॉयडरी, पैच वर्क, मोची भारत, मिरर भारत. जितने भी जयपुर के टेक्निक्स थे, जो वहाँ का कल्चर है, मैंने उसको कोशिश की थी अपने पूरे सरफेस टेक्निक्स में दिखाने का, अपने बैग्स में दिखाने का. ना द गैप विच यू आर सीइंग हियर गाइज, प्लीज़ अवॉइड इट बिकॉज ये मैंने अपने बुक बाइंडिंग के लिए स्पेस छोड़ा था, ताकि उतना पोर्शन कट जाता है जब आप बुक बाइंड करवाते हो. तो इसको अवॉइड करो आप, इसको आप खुद से ज्वाइन करके देख लेना. सो दिस इज़ द मशीन एम्ब्रॉयडरी डन, दिस इज़ द कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी डन देयर. This was the sampling department of my home furnishing department. This was the sampling from computer embroidery. And this is the design gallery. Now you can see मैंने यहाँ पे separately design gallery लिखा है. And इसमें अड्डा work है. अड्डा work is what? The bead and sequin work done is known as adda, and both the sample consist of bead and sequin dabka of various bright colors. Now जो भी मैंने यहाँ पे दिखाया है इमेजेस, ये मेरे बनाए हुए हैं, ये मेरा डिज़ाइनिंग है, और जो भी टेक्निक्स इस पे यूज़ हुई है मैंने उसको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अपर पेज पे मेंशन किया हुआ है अंडर माय दिस डिज़ाइन गैलरी. सो दिस इज़ गोइंग टू बी कॉमन इन ऑल माय पेजेस अभी से, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी
changed. And this is the purse which I have worked upon. Now आरी वर्क क्या होता है, अड्डा वर्क क्या होता है, मैंने यहाँ पे ये सब कुछ बता दिया है इन केस यू डोंट नो. अगेन दिस वॉज द लेआउट. आप मेरा लेआउट देख सकते हो. मेरे जूरी मेंबर को ये डॉक्यूमेंट बहुत पसंद आया था एंड आई गॉट वेरी गुड मार्क्स. सो इफ़ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन योर डॉक्यूमेंट, आप इस तरीके का लेआउट ले सकते हो. एंड सी हीर भारत इज एम्ब्रॉयडरी इज वेयर डिज़ाइन इज फिल्ड विथ थ्रेड वर्क. मैंने वो सब कुछ शो करा है कि किस टाइप की एम्ब्रॉयडरी है, किस टाइप का मोटिव है जो कि बैग पे बनाया गया है. अगेन यू कैन सी ऑल दीज मोटिव्स विच वॉज मेड बाय मी. Embroidery and adda work. So these were the bright colors, bright thread work, which comes under the culture of Rajasthan and Jaipur actually. So that's why this was done under the mentorship of Jasdeep Ahuja and Amrita Singh, who was my mentor. So इसलिए ऐसे colors लिए गए हैं जो कि highly traditional हैं. ठीक है. Then these were the bags and the pouches and the clutches. As you can see, the pom-poms, the stone work, the applique work. So this was the applique work, this was the stone with applique work or the bead work, you can say. The clutch is designed taking an inspiration from ocean bed. So here you can see more bags, and some of these bags were selected by the buyers too. So I had a very good time there. Now I have shown the SWOT analysis. This is the very important part of the document, guys. अगर आप SWOT नहीं लिख रहे हो then प्लीज़ लिखो, बिकॉज इस पे बहुत सारे मार्क्स हैं. यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड मार्क्स इफ़ यू आर एनालाइजिंग SWOT ऑफ दैट कंपनी. SWOT मीन्स व्हाट? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट. तो हर एक कंपनी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, दे हैव वीकनेसेस टू, दे हैव अपॉर्चुनिटीज़ टू, एंड दे हैव threats too. So do mention it in your document, either if you are doing your documentation for internship or graduation project. This is important. So these are the learnings what I learned from my internship. I have shown here. Now this was the conclusion, what I felt after doing the internship. How what was my achievement, what I concluded. So I've mentioned it here. So this is how you are going to mention your conclusion, and any suggestion which you want to give to your company which you have visited or your department, that also you can include in your document. And lastly, the bibliography, do mention it. So these all topics these titles are very, very much important if you are designing your documentation. And the last, reference, do mention it, because jury पूछती है कि सब कुछ आपका नहीं हो सकता. कुछ पिक्चर्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स आपने लिए होंगे जो आपने गूगल से लिया होगा या फिर आपने कहीं से किसी वेबसाइट से उठाया होगा, कोई ऐसा टेक्स्ट, कोई ऐसा फ्रेज. सो उसको आप, उसके लिंक को एज इट इज़ यू कैन प्लेस इन योर रेफरेंस एंड you are good to go then. So this was my last page. This was my conclusion with my picture, and it's done. See, this is the last cover, back cover of that document, and here it is written Department of Fashion and Textiles, National Institute of Fashion Technology. So guys, I hope आपको समझ में आया होगा all the important topics and the parts of this documentation in this industrial documentation. अगर आप second year में भी हो तो भी आप internship पे जा सकते हो. Even I went for the internship in the second year, although it was not demanded by college, but still I went for my experience and I went to my hometown. So मैं उसका भी document मैंने बनाया था and वहाँ पे भी मैंने एक collection बनाया था. So I will come up with that document too, which will help you a lot if you go to any kind of internship, चाहे वो 10 days का हो, चाहे वो 1 month का हो, कितने भी टेन्योर का हो, आप अगर जा रहे हो कितने भी ड्यूरेशन का हो, तो आप उसके बेसिस पे अपना एक डॉक्यूमेंट बना सकते हो, एंड दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन योर प्लेसमेंट्स दैट टाइम. ठीक है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू से यू ऑल कि लाइक अभी आप इंटर्नशिप पे होगे, सो जितने पिक्चर्स आप क्लिक कर सकते हो, क्लिक इट, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प इन योर document process.
And one more thing which I would like to suggest you all, like I have made my this document on InDesign. Okay, so हमें portfolios के लिए InDesign ही सिखाया गया था, and बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है if you want to design any magazine, any book, any portfolio or any documentation. So आपको ये कॉलेज में सिखाया जाएगा probably in your 5th 6th semester. So बहुत अच्छे से सीखना, आगे जा करके ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है. And if you need any guidance on software of InDesign, अगर आपको पोर्टफोलियो में गाइडेंस चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन में गाइडेंस चाहिए, and if you want to learn that software, you can also ping me and take the personal classes from me, because I am giving the personal classes on portfolios and documentation and software skills too. Till then guys, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, then please go and subscribe my channel, and because my channel will help you a lot in your college like exams and juries and other documentation and portfolios which you will be making further. Any kind of software skills if you want to learn, और कोई question है software से related, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, and I will be guiding you through my channel. And do take care. Till then, bye bye.